Friends, I hope you all are safe at your home. Today we are going to start with question 6 of exercise 4.1. Set up an equation in the following cases. First of all, we read the statement. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take M to be the number of Parmeet's marble. इस क्वेश्चन में बेटा वेरिएबल पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए हम अपनी तरफ से कोई और वेरिएबल एज्यूम नहीं कर सकते, एम ही एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट्स परमीत मार्बल इज इक्वल टू एम. सो 5 टाइम्स marbles Parmeet has, that means 5m. 7 marbles more than plus 7, 5m plus 7 equal to 37. This will be the equation. 5m plus 7 equal to 37. Now next part. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. So 3 times Lakshmi's age, that means 3y plus 4 equal to 49. We will write down as 3y plus 4 equal to 49. Next part is, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. So 12 plus 7 equal to 87. In part 4, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be B in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. Beta, it means 2b plus b equal to 180, that means 4b equal to 180. अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको ड्रॉ करके, ये रफ वर्क है. ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये वर्टेक्स एंगल होता है और नीचे ये दोनों बेस एंगल्स. दिस इज़ 2b, दिस इज़ b, दिस इज़ b. सो इनको ऐड करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट होगी. 2b प्लस b इक्वल टू 180, दैट मीन्स 4b इक्वल टू 180. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. In this exercise, we have given question 1. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. इस क्वेश्चन में बेटा हम सिर्फ इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे. स्टेप आपको मैं वर्बली बताऊंगी, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें. पार्ट ए इज x minus 1 equal to 0. We will solve this equation. x minus 1 equal to 0. x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 की साइड चेंज करेंगे, RHS पर ले जाएंगे इसे, तो साइन भी चेंज हो जाता है. जब भी कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है बेटा. माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में. तो ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा. सो x इज़ इक्वल टू 1. और स्टेप अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज -1. साइड चेंज करने को हम बोलते हैं ट्रांसपोज. पार्ट बी, x plus 1 equal to 0, it is given. So we change the side of +1, it will remain -1. So x equal to -1. इसी तरह से बेटा सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा पार्ट f. y माइनस 4 इक्वल टू 4. -4 को RHS पर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा. y इक्वल टू 8. इसी तरह से हमारे क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स और हैं, g एंड h. ये भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे. और फिर क्वेश्चन 2 में भी सेम प्रोसीजर है. सॉल्व द इक्वेशंस लिखेंगे हेडिंग और सॉल्व कर देंगे. ए पार्ट में 3l इज़ इक्वल टू 42 ये दिया हुआ बेटा.
इसको सॉल्व करेंगे, 3 की साइड चेंज करेंगे। सबसे पहले 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। L इक्वल टू 42/3, 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। L इक्वल टू 14। नेक्स्ट पार्ट, B पार्ट इज B/2 इक्वल टू 6। We will change the side of this 2. B equal to 6 multiply 2. B equal to 12. In next part, P/7 equal to 4. Same procedure. P equal to 4 multiply 7. P equal to 28. In part D, we have given 4x equal to 25. X equal to, अब ये 4 इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 25/4. Now we will convert this number into a mixed fraction. So we got 6 and 1/4. In next part we have given 8y equal to 36. So y equal to 36/8. Firstly we will reduce this. We can divide both the numbers by 4. 4 2s are 8, 4 9s are 36. So then we will convert this fraction into a mixed fraction, y equal to 4 and 1/2. In next part we have given z upon 3 equal to 5/4. Firstly we will change the side of this 3. Z equal to 5/4 multiply 3. We got 15/4, and now we will convert this into mixed fraction. Same procedure we will follow in part G. Now part H, 20t equal to -10. We will change the side of 20. T equal to -10 upon 20. And we can cancel 0 by 0. T equal to -1 upon 2. Now question number 3, same heading, solve the equations. We have given in part A 3n minus 2 equal to 46. Now firstly we will change the side of -2. 3n equal to 46 plus 2. So 3n equal to 48. Now in next step we will change the side of this 3. N equal to 48/3. Now we can divide these two numbers by 3. 3 1s are 3, 3 16s are 48. N equal to 16. Part B we will do in the same manner. Now part C, 20p/3 equal to 40. Firstly we will change the side of this 3. 20p equal to 40 multiply 3. We got 120 at RHS. Now we change the side of this 20. P equal to 120/20. We can divide these two numbers by 20. 21s are 20, 26 are 120. So P equal to 6. Same method we will apply in part D. Now question 4. Same heading. In part A, 10p equal to 100. We will change the side of 10. P equal to 100 upon 10. 1 0 cancel by 1 0. P equal to 10. In next part, 10p plus 10 equal to 100. 10p equal to 100 minus 10. 10p equal to 90. Now we will change the side of 10. P equal to 90 upon 10. P equal to 9. P/4 equal to 5. P equal to 5 multiply 4. So we got P equal to 20. In this part D, we have given minus P upon 3 equal to 5. Firstly, we change the side of 3. Minus P equal to 5 multiply 3. That means minus P equal to 15. Now, minus P means minus 1 multiply P. So we change minus 1. P equal to minus 15. In part E, 3p/4 equal to 6.
Firstly, we change the side of 4. 3p equal to 6 multiply 4. That means 3p equal to 24. Now we change the side of 3. p equal to 24 upon 3. We can divide these two numbers by 3. 3 ones are 3, 3 eights are 24. So p equal to 8. Same procedure in part F, and now in part G. 3s plus 12 equal to 0. So firstly we change the side of plus 12. 3s equal to 0 minus 12. So 3s equal to minus 12. Now we change the side of this 3. So s equal to minus 12 upon 3. We can divide both numbers by 3. So s equal to minus 4. Now in part H, 3s equal to 0. So s equal to 0 upon 3. So the value of s is 0. In part K, 2q plus 6 equal to 0. Firstly we change the side of this 6. We got 2q equal to minus 6. Now we change the side of this 2. We have minus 6 upon 2. We will divide these two numbers by 2. So we got the value of q minus 3. So it's over for today, students.